इस वीडियो के बाद आपका इंग्लिश बोलने और सीखने का तरीका डेफिनेटली हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, जब इंग्लिश बोलने का वक्त आता है तो दिमाग में सब कुछ आता है, बस इंग्लिश ही नहीं आती। इतना इजी सा सेंटेंस बोलना होता है और हम ब्लैंक हो जाते हैं, कॉन्शियस फील करते हैं और कई बार तो ऑकवर्ड फील होने लगता है। पर आखिर ये होता क्यों है? लेट्स फिगर इट आउट। हम ग्रामर, स्कूल बुक्स, उसके अलावा कोर्स बुक्स, एग्जाम्स, सब कुछ के लिए तैयारी करते हैं, बट स्पोकन की तैयारी नहीं करते। एंड दैट्स व्हाट द कैच इज। वी नीड टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। एक्चुअल कॉन्फिडेंस मिलता है डे टू डे लाइफ के सिंपल इजी सेंटेंसेस को बोलने से। सेंटेंसेस दैट यू कैन रिपीट ऑन डेली बेसिस, मे बी 10 टाइम्स अ डे। कौन ऐसे बड़े बड़े शब्दों में हिंदी बोलता है? Similarly, we cannot speak with huge words, with heavy vocabulary, even in English. What we need to learn is spoken English, the daily, practical, easy, but confident English. So let's get started with those words, those sentences जो आपको दिन में कम से कम 10 बार रिपीट में चाहिए हो। First is asking. जब आपको इंग्लिश में पूछना हो क्या, what you will say is what? Can you repeat it? Come again. What happened? ये वर्ड सिंपल हैं, सेंटेंसेस इजी हैं। Now trick here is play with the tone. वो पीके मूवी देखी है ना, एक एलियन समझ गया कि यहाँ इस धरती पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बोलने में? कम्युनिकेशन कम्स विद इंटोनेशन। हमें टोन का ध्यान रखना ही होगा। Now second is responding. वैसे तो हम नॉर्मली ओके बोलकर रिस्पॉन्ड कर देते हैं, but to look more professional, more confident, what we can use is got it, that works for me, sounds good, but try तो करके देखिए, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल जो ही शूट कर जाएगा। The third is requesting, and this is my personal favorite. Instead of saying क्या बोला, ए रुकना, what we can say is please come again, please wait for me, wait for a moment. थोड़ा सा स्मूथ, थोड़ा सा पोलाइट, बट आपकी इंग्लिश का लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। Now fourth is confirming. When someone asks you something, but you can revert with, let me check. I'll get back to you on this. Thanks for checking. This looks fine. All these sentences make you look like as if you know what you're doing, and that's what we want. Now fifth is expressing. When you want to look composed, what you can say is, it's okay, no problem, I'm fine. I don't know about it, but I'll definitely find it out. These small sentences make you look confident. And if you want to learn simple, practical, but usable English, do follow Learning Language, because we are coming with something special for you.